Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we were discussing about formation of legislative assembly, means हम लोग legislative assembly राज्य विधानसभा का डिस्कशन कर रहे थे, under which we discussed the number of members in legislative assembly under article 170, which can be 500 maximum, 60 minimum. We discussed that Sikkim, Goa and Pondicherry are exception of that. Along with that, we discussed about the presence of reservation of seats for SC/ST. Along with that, discussed about qualification required to be a member of legislative assembly. Now, as the next, we are going to add something in the last point, which was related with the qualification to be a member of legislative assembly. यानी आगे का जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है. इट्स एन टॉपिक रिलेटेड विद द क्वालिफिकेशंस. यानी मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं, लेकिन वो मेंबर बनने के बाद उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट भी हो सकती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years. Okay, generally an MLA is appointed for a period of 5 years. MLA means member of legislative assembly, appointed for a period of 5 years. Okay, means until legislative assembly will be in session, the MLA will enjoy his tenure. Okay, but there are certain situations mentioned under Article 190 of the Indian Constitution. Under these situations, the membership of a particular person or of an MLA can be terminated from the legislative assembly. So now, which are these situations? About that we are going to discuss today. Okay. So guys, Article 190 के according, there are 3 situations under which the membership of an MLA can be terminated. Okay. तो पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप. टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप यानी किसी की सदस्यता का समाप्त होना फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, these things are mentioned in article 109. ओके, अब इसमें सबसे फर्स्ट जो सिचुएशन है वो क्या है? ओके, सो गाइस, एज द फर्स्ट सिचुएशन, इफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम अ member of both legislative assembly and legislative council at the same time, or a person become a member of legislative assembly in 2 states or more than 2 states. यानी एक MLA जो है वो एक स्टेट में MLA है और वैसे ही वो दूसरे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी MLA इलेक्ट हो जाता है. और यदि एक स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो एक पर्सन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में मेंबर बन जाता है. और एज द थर्ड पॉइंट, इफ द पर्सन appointed or elected as the member of legislative assembly and parliament at the same time, then in such a situation he have to resign from one. Okay, यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि एक पर्सन MLA बनता है, member of legislative assembly बनता है, at the same time he is also appointed as an MLC. MLA और MLC दोनों एक साथ बन जाए, या फिर member of legislative assembly बने in 2 states or more than 2 states. Okay, along with that if he elected both as an MLA or MP, यानी member of legislative assembly और member of parliament दोनों एक साथ elect हो जाए, then in such a situation we have to resign from one. इन दोनों सिचुएशन में या फिर इन दोनों सिचुएशन में या फिर इस सिचुएशन में एक को छोड़ना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? सो
under Article 119, the first point related with the termination of membership says that if a person became a member of Legislative Assembly and Legislative Council at the same time, or if he is elected as a member of Legislative Assembly and member of Parliament at the same time for both these organizations, then he has to resign from one. यानी वो दोनों में से एक ही रख सकता है, या तो वो member of लेजिस्लेटिव असेंबली रह सकता है, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रह सकता है। इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर वो एक साथ नहीं बन सकता। इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन रिलेटेड विद टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप मेंशन आर्टिकल 190 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट वन। The next situation says that if a person remain absent for a period of 60 days from the meetings of Legislative Assembly without prior permission, okay, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की सेशंस शुरू होने के बाद उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग से यदि कोई मेंबर 60 डेज तक बिना प्रायर परमिशन के एब्सेंट होता है, then in such a situation his membership can be terminated. Is that clear? Okay. So this is the second situation which says that no one, means no MLA can be absent for more than 60 days or for 60 days without prior permission. Okay. तो एब्सेंस के लिए उनको परमिशन लेना जरूरी होता है। as a student we take permission from the school management, from class teacher, from principal. Okay. So the next point says that 60 days तक बिना परमिशन यदि एब्सेंट रहे तो उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो सकती है। Now the third point. Guys, under the third situation, it is mentioned that third situation में कहा गया है कि यदि after the election or if after being appointed as member of Legislative Assembly, some inequalities proved in that particular person or any inequality proved in that particular person, then his membership can be terminated. यानी इसमें ये भी कहा गया है थर्ड कंडीशन के रूप में कि यदि इलेक्शन के बाद में ऐसा प्रूफ होता है कि उसमें जो डिसाइडेड क्वालिफिकेशंस हैं उनमें किसी एक क्वालिफिकेशन की कमी है, एक से ज़्यादा क्वालिफिकेशंस की कमी है जो बाद में प्रूव होती हैं, then in such a situation his membership can be terminated. ओके, यानी जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, यदि कोई मेंबर उन क्वालिफिकेशंस में से किसी एक क्वालिफिकेशन को झूठा बताकर कोई मेंबर बन जाता है और उसके बाद में ये प्रूफ हो जाता है कि इसमें ये क्वालिफिकेशन अब नहीं है, then in such a situation he have to resign, उसको resign करना पड़ेगा, means his membership can be terminated. Is that clear? So in this way, under Article 190 there are three situations in which the membership of a member after election can be terminated. Is that clear? तो ये point qualification से ही related है. Now after that the next point, and that is related with tenure. So guys, if we talk about the tenure of the members of Legislative Assembly or tenure of Legislative Assembly, then it is 5 years, as it is there for Lok Sabha. Okay. Article 170 of the Indian Constitution related with the tenure of Legislative Assembly, which says that the tenure of Legislative Assembly, actually maximum tenure of Legislative Assembly is 5 years, or we can say that generally the tenure of Legislative Assembly is for 5 years. Legislative Assembly is elected for a period of 5 years. Okay, but it can be dissolved before completion of tenure by governor. Is that clear? Okay. So सिंपल सा पॉइंट ये है कि एक बार इलेक्शन होने के बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 5 इयर्स तक रहेगी, but before the completion of tenure it can be dissolved by the governor on the advice of chief minister, as Lok Sabha can be dissolved by the president on the advice of prime minister. Is that clear? Okay. Now the next one.
तो टेन्योर का मेंशन किया गया आर्टिकल 172 में, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जनरली 5 इयर्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, लेकिन टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी गवर्नर के द्वारा इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, एंड दिस थिंग इज रिलेटेड विद द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। यानी जैसे चीफ मिनिस्टर की एडवाइस मिलती है गवर्नर को, तो गवर्नर ऐसा कर सकते हैं। देखिए, ही कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर द completion of the tenure of 5 years. Is that clear? Okay. Now after that, the next one, and that is related with officers. Okay. So guys, under Article 178 of the Indian Constitution, it is mentioned there that there are 2 officers in the Lok Sabha: Speaker and Deputy Speaker. ओके, यानी यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जस्ट we discussed in Lok Sabha there are 2 speakers in Legislative Assembly also, which are Speaker and Deputy Speaker. तो आर्टिकल 178 कहता है that there are 2 officers in Legislative Assembly, Speaker and Deputy Speaker, which are appointed by the which are elected by the elected members of Legislative Assembly from one among them. Means we can say that Article 78 of the Indian Constitution says that to preside over the meetings of Legislative Assembly, the elected members of Legislative Assembly will elect Speaker, and in the absence of Speaker, Deputy Speaker. Okay, from one among them. तो यहाँ पे आपको ये माइंड में रखना है कि आर्टिकल 178 के अकॉर्डिंग स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन जो होता है वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा ही किया जाता है, और ये डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 178 में मिलता है। एंड दिस स्पीकर इज जनरली अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, मींस अंटिल द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जितना लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर होता है उतना ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का होता है। Is that clear? But under 117 article 179 it is said that the speaker and deputy speaker can submit his handwritten resignation, speaker to the deputy speaker and deputy speaker to the speaker. Is that clear? तो यहाँ पे कहा गया है कि बिफोर 5 years also the membership of the speaker can be tenured, यानी स्पीकर का जो पोस्ट है, जो जिस पर्टिकुलर पर्सन को स्पीकर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, उनकी जो स्पीकर की पोस्ट है वो वैसे 5 year के लिए होती है जब तक कि लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन होता है। नेक्स्ट इलेक्शन की जो फर्स्ट मीटिंग होती है उस मीटिंग तक स्पीकर जो होता है वो अपनी पोस्ट पे होता है। ओके, उसके बाद फर्स्ट मीटिंग में नया स्पीकर इलेक्ट किया जाता है, लेकिन समटाइम the speaker can be removed or he can resign, okay, from his post. First one, he can himself resign or submit his resignation to the deputy speaker and deputy speaker to the speaker. This is the first situation related with resignation. In under article 179 it is mentioned that the speaker can submit his resignation to the deputy speaker and the deputy speaker can submit his resignation to the speaker. Is that clear? Along with that, the speaker and deputy speaker can be removed by the members of legislative assembly by passing a motion of removal against the speaker or the deputy speaker. But for this kind of motion, it is necessary to inform the particular person, means the speaker or deputy speaker, before 14 days. Is that clear? तो यहाँ पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली करते हैं। आर्टिकल 179 के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि वैसे तो स्पीकर 5 years के लिए होता है जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर होता है, लेकिन वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो खुद डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को सबमिट करवा सकता है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली मोशन पास करके उसको उसकी पोस्ट से हटा सकती है। और ऐसे मोशन को प्रेजेंट करने से 14 days पहले उस पर्टिकुलर पर्सन को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाना जरूरी होता है, उसको नोटिस भेजा जाना जरूरी होता है। इज दैट क्लियर? एंड
आपको ये भी माइंड में रखना है that if a motion of removal against speaker or deputy speaker is under process, then in such a situation that particular person is not allowed to preside over the meetings. ओके, यानी स्पीकर के अगेंस्ट यदि मोशन चल रहा है तो स्पीकर को मीटिंग्स को प्रिसाइड करने की या फिर उनकी अध्यक्षता करने की परमिशन नहीं होती है. Is that clear? Now after that, as the next, we are going to discuss about the functions, powers and rights of speaker. Okay? तो स्पीकर जो होता है उनके पास में कौन कौन सी पावर्स होती है, about that we are going to discuss. So I think now it is clear in your mind that how the speaker of Lok Sabha is appointed. Okay, Lok Sabha का speaker कैसे appoint होता है ये आपको पता है. Now the next one, and that is powers of speaker. Okay, functions of speaker, rights of speaker. So guys, as we discussed at the time of appointment election of the speaker, we discussed that under article 178 it says that the speaker means there will be one speaker for legislative assembly to preside over the meetings of legislative assembly appointed by the elected members of legislative assembly. इसका मतलब कि स्पीकर का जो फर्स्ट फंक्शन होता है that is related with presiding over the meetings of Lok Sabha, means we can say that the speaker preside over the meetings of presiding over the meetings of legislative assembly. यानी स्पीकर जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है, उनकी अध्यक्षता करता है. Along with that, it is the responsibility of the speaker to maintain law and order in the house. Okay, यानी डिसिप्लिन मेंटेन करना, law and order in the house. Okay, it is also the responsibility of the speaker of legislative assembly. Is that clear? तो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है. इज दैट क्लियर? सो स्पीकर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दी हाउस. आफ्टर दैट द एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग्स और ऑफ द हाउस इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर. ओके, सो द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग, प्रोसीडिंग्स ऑफ meetings is decided by the speaker with the advice of leader of the house. यानी हाउस में जो भी कार्यवाही होगी उस पूरे दिन में मीटिंग में जो डिस्कशन होगा वो कंप्लीट डिस्कशन जो प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस होता है, मीटिंग होता है, वो स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, मींस ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग, द स्पीकर कैन रिमूव unparliamentary words or derogatory words from the proceeding. Means if there is any word which is derogatory, जो अपमानजनक है, which is unparliamentary, जो पार्लियामेंट के जो एक डिग्निटी होती है उसके अगेंस्ट है, then in such a situation this kind of word can be removed by the speaker. यानी स्पीकर किसी भी असंसदात्मक वाक्य को, शब्द को प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस से, उस सदन की कार्यवाही से हटा सकता है. इज दैट क्लियर? ओके, along with that the speaker is also having a power to adjourn the meetings of the legislative assembly to maintain the discipline. यानी कभी भी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करने में स्पीकर को प्रॉब्लम होती है, देन ही कैन एडजर्न द सेशन. वो मीटिंग्स को एडजर्न कर सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन, द स्पीकर accept and reject the
questions. The speaker accept and reject the questions of the members. यानी members के द्वारा जो questions पूछे जाते हैं, if they are adequate then he accept that, otherwise he reject that. यानी यदि speaker को सही लगे तो questions को accept करता है, और यदि वो questions उनको सही नहीं लगते हैं then he can reject these questions. Is that clear? Okay. Along with that, the speaker conduct voting in the house, and after the voting, he conduct voting, and after the voting, he declare result. Okay, so he conduct voting and declare result. Voting करवाते हैं, उसके बाद में result declare करता है. It is also the responsibility of the speaker. Now after that, the speaker is not allowed to cast his vote in जनरल सिचुएशंस. यानी जनरली जो वोटिंग होती है उसमें स्पीकर को वोट डालने का राइट नहीं होता. बट इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ टाई, ओके, मींस इक्वल नंबर ऑफ वोट्स इन support and opposition of a particular motion, particular bill, then in such a situation the speaker is allowed to cast his decisive vote. यानी जनरली स्पीकर वोट नहीं डालता है, लेकिन यदि ऐसे सिचुएशन आए कि number of votes in favor and number of vote in opposition same हो, equal हो, then in such a situation he can cast his decisive vote. तो ऐसे सिचुएशन में जो निर्णायक वोट होता है, the vote which will decide the result is known as the decisive vote. तो ऐसा वोट डालने का राइट किसके पास में होता है? the speaker. Okay, and now the last one which is related with declaration of a bill as a money bill or not. Means the speaker declares or the speaker decide that whether a bill is money bill or not. यानी कोई बिल मनी बिल है या नहीं, it is decided by the speaker of legislative assembly. Is that clear? Now finally there is a question for you, and that is write me in the comment section that who is the present speaker of legislative assembly of Rajasthan. Is that clear? Question is, who is the present speaker of legislative assembly of Rajasthan at present? Okay, so guys, in this way the discussion related with formation of legislative assembly has been completed. Means we discussed about the formation, about the number of members, about qualifications, tenure, reservation, election procedure, the different conditions related with termination of membership, speaker and deputy speaker, and the powers of speaker and deputy speaker. About the remaining things we'll discuss in the next one. Till then, stay at your home, be safe. Don't forget to write me the answer in the comment section, and along with that, if there will be any doubt, then you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. See you soon in the next one. So guys, thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.